हेलो एवरीवन। पूर्व वीडियो रे लॉज ऑफ मोशन रो इंट्यूटिव कांसेप्ट ऑफ फोर्स और लॉज ऑफ इनर्शिया हमर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विषय रे डिस्कशन होइतला। तो वर्तमान नै आछि परवर्ती टॉपिक मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विषय पढ़िया। तो फोर्स विषय जहां भी हम सब पढ़ितले फोर्स होजी कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स आमर स्प्रिंग फोर्स टेंशन फोर्स एभली फोर्स विषय पढ़ते तापरे न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन थिला लॉज ऑफ इनर्शिया। ए लॉ ऑफ इनर्शिया रो डेफिनेशन हमरो एग्जांपल कहि देतली। तो एग्जांपल उटर लिखि दउची से लॉज ऑफ इनर्शिया रे बाकी थिला एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट रो। इनर्शिया कोन इनर्शिया होसी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी in which everybody continues to its state of rest or uniform motion unless it is disturbed by some external force. The inertia laws of inertia is inertia can be divided two types. Number one is inertia of rest or inertia of motion. Inertia of rest kono na every inertia of rest it is almost property of a body in which everybody continues to its state of rest unless it is disturbed by an external force. So but inertia of motion कहतली everybody continues to its state of rest. Everybody continues to its state of uniform motion unless it is disturbed by an external force. से पर्यंत गोटे वस्तु उपरे बाहर कोनोसी बल प्रयोग करा जाय नथिबो से पर्यंत प्रत्येक स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो एवं प्रत्येक गतिशील वस्तु एक सरल रेखारे सेमति गति करिवो। एटाला इनर्शिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट हला से पर्यंत गोटे वस्तु स्थिर रहिबो जे पर्यंत कोनसी एक्सटर्नल फोर्स तापर अप्लाई होबा नै। इनर्शिया ऑफ मोशन कोन से पर्यंत गोटे वस्तु सेमति एक सरल रेखारे गति करथुबो जे पर्यंत तापर कोनसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होई नथिबो। तो प्रत्येक जड़ वस्तु माने प्रत्येक वस्तु माने प्रत्येक सेमानंकर धर्म को बजाय रखिबा को चेष्टा करथि। एटा इनर्शिया प्रॉपर्टी एटा न्यूटन ताकर फर्स्ट लॉ रे कहथिले जे प्रत्येक वस्तु से स्थिर वस्तु हो बा गतिशील वस्तु से माने सेमानंकर प्रॉपर्टी रक्षा करिया को चाहंती जे पर्यंत सेमानंक ऊपर कोनसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होई नथिबो। तो केंती सेमाने सेमानंकर प्रॉपर्टी रक्षा करिया को चाहंती तो एग्जांपल द्वारा हम कहिथिले देखो। तो फर्स्ट एग्जांपल होजी इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्थिरतार जड़ता। स्थिर वस्तु सेमानंकर स्थिर अवस्था प्राप्त किभଳି भाबरे करंती ए पर्यंत समान ऊपर बाहर कोनसे फोर्स अप्लाई हे नथिबो। एग्जांपल देखो ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड्स when the bus suddenly starts moving forward. When the bus moves, the lower part of his body begins to move along with the bus while upper part of his body continues to remain at rest due to inertia. That's why a person falls backward in the bus. जेतबेले गोटे बस रे गोटे पर्सन छिडा हेतिबो तो हठात बस सडनली स्टार्ट करथिबो से समय रे बस रो पर्सन रो लोअर पोजीशन टा बस एत रेस्ट थिबो स्टार्ट करबा पूर्व बिफोर द बस स्टार्ट। तो जेतबेले हठात स्टार्ट करिवो सेतबेले कोन करिवो तो लोअर पार्ट मूव करिवो और से समय रे स्थिरतार जड़ता इनर्शिया ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर पार्ट रेस्ट कंडीशन थिबो जेतबेले स्टार्ट करिवो ऊपर पार्ट ले रेस्ट थिबो पछु बैकवर्ड हेजिबो। तो आ गुड एग्जांपल सेमती टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए कार्पेट वी माइट हिट विथ ए स्टिक। The carpet moves with the force of the stick but the dust particles remains in their original position and separate from making carpet। जेतले डस्ट पार्टिकल कार्पेट रे थिबा हम तो कार्पेट को झाडु छे रेस्ट कंडीशन थिबो जेतले हम कार्पेट को मूव करू छे सेतले डस्ट पार्टिकल गुडा कम होचंदी तंकर रेस्ट inertia of rest due to inertia of rest they are at same position। कार्पेट जेतले मूव करछि से माने रेस्ट अवस्था थिबो से माने से सीधा तळ को झाडी पडंती। तो एटा हला inertia of rest रो एटा एग्जांपल। अब inertia of motion the example of inertia of motion when a moving bus suddenly stops a person sitting in it falls forwards। जेतबेले मूविंग बस रे जने ठिया कि जाउतो बहुत जाउछंदी तो ठिया कि तो धरतिबो तो बस मूविंग करछि
एंटायर सर्वे मूविंग करछि तो लोअर पार्ट भी मूविंग करछि तो हठात कोन होइछि एज द बस स्टॉप हठात कोन कारणवश बस हठात सडनली ब्रेक दे दिए स्टॉप देला पर कोन हिजबो तो लोअर पार्ट भी सडनली स्टॉप हे जिवो बट अपर पार्ट मूविंग करतो तो मूविंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगु को पड़ जिवो द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट जेते बस रहिबा सहित लोअर पार्ट रेस्ट हे जिवो and along the bus सहित while the upper part of his body continues to remain in motion जेतु बस तो मोशन जाउतो से मोशन टा धर्मटा तार रखा पई ड्यू टू इनर्शिया एंड फॉल्स फॉरवर्ड टू तो ये गोटे एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल नोट कर दियो a long jumper takes a running start to build momentum using their inertia to help him तो गोटे लॉन्ग जंप दो गोटे सेते तो दूररू टिके बाटरू दौड़ी के आसला पर कोन होजी लोअर पार्ट ता रेस्ट है अपर पार्ट ता मोशन कंडीशन तो आगु जति बाट जंप करतो से आउट के आगु बाट पळेबो तो सहित inertia of rest inertia motion users fast law of motion already completed gala inertia Newton's fast law is totally based on inertia so that Newton's first law of motion is also called as inertia laws of inertia ଆମର laws of motion ର syllabus अनुसार next topic होची न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जीवा पूर्वरु हमें मोमेंटम विषय टे भले जानबा जोटा को पी जोटा ओडिया रे हम कहंदी संवेग मोमेंटम कोन ता विषय टिके जानिबा मोमेंटम जनरली मोमेंटम होची mass of a body in moving velocity गोटे बॉडी जते बेले गति करूची बा मूव करूची से बॉडी रो मास आउ वेलोसिटी ए दीटा को इनटू करले प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इनटू करले जानियो से बॉडी रो मोमेंटम दल सेती सपोज गोटे बाइक रे जाउचो बाइक मनकर 1 क्विंटल अछि तो स्पीड मनकर वेलोसिटी अछि 60 किलोमीटर पर सेकंड तो मीटर हला 6000 मीटर पर सेकंड जहाँ भी हो जदि कहबा वस्तुटी बा बाइक रे वर्तमान मोमेंटम केते मोमेंटम रे मूव करूची ताले कोन कर दबो 1 kg * 60 तो बाहर पड़िबो वस्तुर मोमेंटम केते मोमेंटम रे जाउची पुनी प्रति जगह रे जतले वस्तुटा जाउची प्रति जगह रे मोमेंटम पडुची कमोडी चेंज हे जाउची कारण मास तो सब बेले समान रहबो वेलोसिटी सब बेले समान न थाए तो चेंज ऑफ वेलोसिटी सब बेले चेंज हेती आ जते वेलोसिटी चेंज हबो तो मोमेंटम से अनुसार चेंज हे जिवो तो हमें चेंज इन मोमेंटम विषय रे पढ़िया तो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा पूर्व मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम विषय रे पढ़िया कारण न्यूटन सेकंड लॉ कहथिले प्रथम लॉ तो फर्स्ट लॉ तो कहथिले रेस्ट आउ मोशन बॉडी विषय रे कहथिले रेस्ट अछि मोशन से सेमानकर प्रॉपर्टीज टा सेमति से माने बजाय रखबे किंतु एतरे कहले जेतले वस्तु गति करूची बा कोनसी वस्तु ऊपर फोर्स टा अप्लाई होची फर्स्ट लॉ कहले जे किछि से कलेनी जे पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स टा कोनसी बॉडी ऊपर अप्लाई न हेची से पर्यंत स्थिर वस्तु स्थिर रहइबो आउ मोशन वस्तु गतिशील वस्तु सेमति गति करिवो फर्स्ट लॉ कहले तापर कहले जल्दी गोटे स्थिर वस्तु हो रेस्ट वस्तु हो बा मोशनशील वस्तु मोशन छाडी गोटे रेस्ट वस्तु ऊपर फोर्स दिया गला फर्स्ट कहले फोर्स दिया जीवनी तार प्रॉपर्टी रखियो लॉ ऑफ इनर्शिया सेकंड नियम रे हम पढिबा जे गोटे वस्तु ऊपर जेतले फोर्स ता दिया जीवो आ से वस्तु जदी मूविंग कला जदी मोशन अवस्था को आसिला तो सही समय रे से कोन हबो से सेकंड नियम रे कहले तो सही समय रे कोन हबो तार मोमेंटम चेंज हबो आ से मोमेंटम चेंज ता फोर्स सहित कोरिलेशन रखियो से विषय से सेकंड नियम रे कहले तो ता पूर्व प्रथम मोमेंटम ता देखि दबा मोमेंटम कहले हमर जानते दि प्रकार अछि मोमेंटम हो दि प्रकार गोटे हो लिनियर मोमेंटम गोटे हो एंगुलर मोमेंटम छडा लिनियर मोमेंटम जोटा हम पढिया लिनियर जेहेतु वस्तुटा हमर एक सरल रेखा गति जाउछि लिनियर स्ट्रेट लाइन जाउछि हम लिनियर मोमेंटम विषय पढिया मोमेंटम कोन ना मोमेंटम ऑफ ए बॉडी
is the quantity denoted as is the quantity possessed by the quantity of motion possessed by the body ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟା ମୋଶନ କରୁଛି ତ ସେ ମୋଶନର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟାକୁ ବୁଝେଇବ is called linear momentum of body ତ ଲେଖିବା linear momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body is called possessed by the body ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମୋଶନଟା ପଜେସ୍ କରୁଛି और ଆମର ଜେନେରାଲି ମନେ ରଖ the product of mass and velocity of a body is called linear momentum. Product of mass and velocity is called linear momentum. So the linear momentum P में होची P is equal to mass into velocity, where P is equal to momentum, m is equal to हमारा mass, v is equal to velocity. Okay. ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ମାସ୍ ଚାହିଁଥିବ କେତେ ଭେଲୋସିଟିରେ ଯାଉଥିବ ତ ତମେ ତାର ମୋମେଣ୍ଟମ ବାହାର କରିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଲାଇନରେ ମୋମେଣ୍ଟମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉଥିବ ହେଲା ତ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଦେଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ଏଟା नंबर 2 ହେଲା ମୋମେଣ୍ଟମ ର କଣ ଲେଖିବା आ मोमेंटम रो दिग को पटे हबो डायरेक्शन मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड भी रहइबो ता डायरेक्शन रहइबो त लिख दो मोमेंटम is a vector quantity नहीं because it has both magnitude and direction. Vector quantity it has unit बाहर करो p is equal to m into v m रे यूनिट कोन मास रे यूनिट kg v रहउचे मीटर पर सेकंड kg मीटर सेकंड इनवर्स and ग्राम सेंटीमीटर second inverse in SI and CHSE system respectively. तो kg मीटर पर सेकंड इनवर्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स तो ताकि में SI और CHS सिस्टम रे आ कोन लिखबा आ मोरल बॉक्स कोन अछि मिलियन मोमेंटम रो डायमेंशन it has dimension m रो dimension वाला m v वाला इंच lt minus 1 it has dimension mlt minus 1 तो ते क्लियर है गला linear momentum विषय जानला linear momentum होज त किछि मन रख linear momentum is the product of mass and velocity of a body गोटे वस्तु जाउची तार मास केते तार वेलोसिटी केते स्पीड रे जाउची इनटू कर दबो तार मोमेंटम वैल्यू हां इट इज डिनोटेड एज p लिखि देने के लिख दो 100 इट इज डिनोटेड एज p ऊपर वेक्टर सिंबल ओके तो लिनियर मोमेंटम विषय पढिला जानि पले लिनियर मोमेंटम कोन मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होजी तार मोमेंटम तो वर्तमान जरा मोमेंटम रो
किसी पार्टिकुलर मोमेंटम किसी स्पेशल केस होतो केस 1 गोटे वस्तुटे मूविंग करूची धरा वस्तु ए मूविंग करूची सपोज यार मास हो m मूविंग करूची माने कोन अछि तो किसी गोटे वेलोसिटी रे जाउची जदि वस्तु रो मास हो m तो किसी वेलोसिटी रे जाउची v देन आमे तार मोमेंटम केते कहि परिबो mv मु आ गोटे वस्तु नेबी इधर m1 जाउची इधर v1 एटा जाउची माने m2 गोटे वस्तु नेबी तो वेलोसिटी जाउची सपोज v2 तो p1 मोमेंटम तो r मोमेंटम केते हबो m2 v2 सपोज गोटे वस्तु सेमति नेबी m3 and so on the momentum of every bodies can be derived in this form है तो एटी कोन करबा हमें बुझबेल मोमेंटम विषय एटी कोन करबा मोटी दुईटा वस्तु नोस दुईटा बॉडी नोस मु तीनटा केस नेबी गोटे केस रे नेबी दुईटा वस्तु नेबी ये हला फर्स्ट केस रे जार जो दुईटा करो मास सेम थिबो मूविंग विथ वेलोसिटी थिबो अलग अलग धर r थिबो v1 r सपोज v2 दुईटा वस्तु रो मास को सेम रखिबे आ वेलोसिटी से मानकर चेंज करियो अलग अलग वेलोसिटी सपोज माने जाउछन ये गोटे केस रे r मोमेंटम देखिया कोन बात करिबा आउ सेमते दुईटा वस्तु रखिबे वेलोसिटी सेम रखिबे दुईटा कर वेलोसिटी सेम अछि तो मास सपोज डिफरेंट अछि m1 m2 रखिबे एक कंडीशन एक केस गुडा बाहर करिया आ गोटे केस नेबी mass differ and velocity differ but momentum से मान करो सेम r momentum p1 r momentum p2 r momentum p momentum डेटा कर सेम रखे तीनटा केस रे बाहर करिया तो बाहर करो केस 1 कौन लिखिया let two bodies having same mass okay moving with velocity v1 and v2 respectively so then p1 is equal to केता हो mass into velocity दर मोमेंटम बाहर करे कोन mass into velocity तो mass केते फर्स्ट वस्तु मास हला m वेलोसिटी हला v1 देन एंड p2 इज इक्वल टू केते तो मास हला m वेलोसिटी हला v2 ओके तो दीटा p1 और p2 को कोन करिबी डिवाइड करिबी दिस इंप्लाई दैट p1 by p2 केता हो mv1 by mv2 is equal to what is v1 by v2 so p1 by p2 is equal to v1 by v2 पहला if v1 greater than v2 then कौन हबो यदि v1 टा v2 टू बड़ होवे त ऑब्वियसली कहि परिबो p1 greater than p2 p1 by p2 is equal to v1 by v2 यदि v1 टा v2 टू बड़ होवे तो p1 टा ऑटोमेटिक v2 टू बड़ होबो ना न्यूमरेटर यदि बड़ हला यार न्यूमरेटर ऑटोमेटिक बड़ हबो डिनोमिनेटर केस रे हर केस रे एटा यदि बड़ हबो एटा सान हबो तो v1 if v1 greater than v2 then p1 greater than p2 तो बुझ पेलो तो एटा ताले कोन जानला जदी दीटा वस्तु रो मास सेम हुए वेलोसिटी अलग अलग हुए जार वेलोसिटी अधिक तार मोमेंटम अधिक जार वेलोसिटी कम तार मोमेंटम कम हमने एटी कहि परिबा हियर p is directly proportional to v directly proportional to v thus lekho thus the momentum of bodies having
same mass and different differ in their velocities directly proportional to directly proportional to the momentum of the body, same mass, different velocity directly proportional to velocity velocities of bodies. That means P direct proportional to V. Okay. Then हम करिया case 2. भागुची समझते वाले बुझी पड़ती case 2. case 2 कौन कले एक केस ना नबा फर्स्ट केस नेले मास सेम थिबो वेलोसिटी डिफर थिबो तो सेकंड केस लखिया वेलोसिटी सेम लेट two bodies having mass m1 and m2 moving with velocity v, same velocity, moving with same velocity v, then बाहर करो p1 केते हबो m1 v हे जो p2 केते हबो m2 v हे जिवो ओके so then p1 by p2 is equal to m1v by m2v so is equal to जो v भी कैंसिल हो गले m1 by m2 अतः p1 by p2 is equal to m1 by m2 तो ये कौन जानिबो if m1 greater than m2 p1 greater than p2 automatically हबो so if m1 greater than m2 then p1 greater than p2 रेड कौन लिख परिवा लिखि दो if two bodies having different masses and moving with same velocities then momentum of their bodies depend upon mass अगर जोटे greater mass of body having greater momentum and small mass of bodies having small momentum तो जार mass अधिक थिबो तार momentum अधिक जार mass कम थिबो तार momentum अधिक ताको जे हम ग्राफ आकर देखिबा ग्राफ आकर देखेले एपट नवा मास एपट नवा मोमेंटम p इटा में जीवो मास जते बढ़िबो मोमेंटम भी सेते बढ़िबो मास जते बढ़िबो मोमेंटम सेते बढ़िबो ग्राफ टा केमते आसीबो एटा भी आसीबो मास 1 2 3 4 5 मास बढ़ी बढ़ी चलिबो मोमेंटम भी बढ़ी बढ़ी चलिबो मास जते बढ़ुतिबो मोमेंटम सेते बढ़ुतो मास याडे गले मोमेंटम याडे आसीबो 0.80 मास बढ़िबो मोमेंटम 80 पॉइंट तो ग्राफ टा केमते हबो एठी हबो जोटी हमर वेलोसिटी होची कांस्टेंट जोटी मास कांस्टेंट थिला फर्स्ट केस रे ता ग्राफ टा केमते हबो एपट तो वेलोसिटी एपट तो मोमेंटम वेलोसिटी जते बढ़ियो मोमेंटम वेलोसिटी से तो डायरेक्टली वेरीज करूची तो वेलोसिटी जते बढ़तो मोमेंटम जते बढ़ियो ए केमते आसीबो ग्राफ टा एटा भी आसीबो तो एठी कोन आसीबो एठी मास कांस्टेंट आसीबो प्रथम दार जो ला तो बर्तमान हमें थर्ड केस को जिबा केस नंबर 3 अच्छा केस नंबर 3 कोन कहले डिफरेंट मास थिबो डिफरेंट वेलोसिटी थिबो बट मोमेंटम सेम थिबो देखो लेट two bodies having masses m1 and m2
moving with velocities v1 and v2 respectively, okay, with same momentum p. तो देन तो p केते आसीबो, तो आमे कोन पाइबा, देन वी गेट, तो r p केते हबो m1 v1, r p केते हबो p1 p2 m2 v2, जे दीटा को सेम तो दीटा को p हम लिखि परिबा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ओके। तो आको हम चेंज कर दियो m1 by m2 इज इक्वल टू v2 by v1। तो एट देखो कोन लिखिबा, if m1 greater than m2 then कौन पाया v1 the m1 greater than m2 हबो, v2 greater than v1 हबो, the m1 greater than m2 हैला तो v2 greater than v1 हबो, तो v1 less than v2 हबो, फाइल लिख दूं v2 greater than v1 और v1 less than v2, यदि m1 greater than m2 होची तो v1 less than v2 हबो। तमने एटी कोन पाइले, जदि दीटा वस्तु दीटा बॉडी मोमेंटम सेम मोमेंटम रे गति करछंती, सेम मोमेंटम में मूव करछंती, दिजन जका दीटा का वस्तुर मास एंड वेलोसिटी अलग अलग, संपूर्ण r मास अलग, r वेलोसिटी अलग, ए वस्तु वेलोसिटी अलग, जदि जाउछन किंतु इक्वल मोमेंटम में जाउछन, सपोज मोमेंटम से मानकर सेम जाउछंती, सेही समय कहिबा मास आउ वेलोसिटी विषय m1 कहले जहार मास अधिक थिबो से कम स्पीड रे जाउथिबो, आ जार मास कम थिबो से अधिक स्पीड रे जाउथिबो। सेही समय जदि से मानकर मोमेंटम सेम हुए ताले इक्वल लाइटर मास मास कम थियो माने जार मास अधिक थियो माने जे हेवियर बॉडी, हेवी बॉडी मूविंग विथ स्लो वेलोसिटी एंड लाइटर बॉडी मूविंग विथ माने स्पीड वेलोसिटी बा अधिक वेलोसिटी। तो लिखि परिबा here two bodies moving with same momentum, then the light body moving the light body will move faster than heavy body। से समय लाइट बॉडी हल्का बॉडीटा हेवी बॉडी टू आहुरी जोर रे जीवो, तो जदि से मानकर मोमेंटम कोन होय सेम हुए। तो वर्तमान देखिया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मोमेंटम विषय जानि गलो, मोमेंटम विषय जानली मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम विषय जानि गलो, तापर चेंज इन मोमेंटम विषय जानि। तो एटा जे सपोज ଗୋଟେ वस्तुटे एठी जाउची अति करची, एठी पहुंचची, सपोज एटा हला a, एटा हला b स्थान रे जाईची, वस्तुर मास m अछि, वेलोसिटी v1 अछि, और मास m अछि, वेलोसिटी v2 अछि। बॉडी कहबी जेतले वस्तु जाउची गति करूची बॉडीटा, से समय कोन होची तार वेलोसिटी चेंज होची। तो एई वेलोसिटी जे चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ए चेंज इन वेलोसिटी जो होची, तो एटी मोमेंटम सपोज p1 अछि, एटी मोमेंटम सपोज p2। तो जेतबेले चेंज इन वेलोसिटी को बा चेंज इन मोमेंटम को सब बेले तम नजर आसो दीटा पॉइंट। तो चेंज इन मोमेंटम कहले कोन वस्तु एमति आसे चलीची, तो ए जगह और बी जगह में
कोन कले देखिले वस्तुर मोमेंटम केते एठी मोमेंटम किछ रहउची एठी मोमेंटम किछ रहउची काहे कि मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड अपन वेलोसिटी जदी मास सेमानकर मास गोटे वस्तु कोन जदी गोटे वस्तु अछि मास तो सेम रहला बट वेलोसिटी डिफर कला जदी वेलोसिटी डिफर कला सेठी कोन हला तो वेलोसिटी निश्चय चेंज हला तो से चेंज वेलोसिटी चेंज हले मोमेंटम चेंज हला आ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कोन करा p2 p1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एटा जानि जो p2 1 जदि वेलोसिटी वेरी स्मॉल चेंज हला टेंड्स टू 0 सपोज एटी वेलोसिटी अछि 70 स्पीड रे जाउची तो हटात 70 पॉइंट समथिंग चेंज हला तो एटी चेंज इन वेलोसिटी होची वेरी स्मॉल जदि वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हला ताले p टा कोन हबो p टेंड्स टू 0 जो p टी बहुत वेरी स्मॉल हबो माने एते स्मॉल 0 पाखा पाखी चेंज होची 0 नहले 0 पाखा पाखी चेंज होची तो चेंज इन मोमेंटम भी स्मॉल है जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेरी स्मॉल हैला तो चेंज इन मोमेंटम वेरी स्मॉल हबो हम डेरिवेटिव रे पढछे चेंज इन वेलोसिटी केमते लिखा जाय dv जे टाइम अनुसार चेंज हला dt जेटा एक्सेलरेशन कहछे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम जदी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ला जदी वेलोसिटी रे बहुत स्मॉल चेंज हला तब हमें dv द्वारा डिनोट करछे बहुत d माने बहुत छोटा जदी p जदी स्मॉल चेंज हला तब हमें dp कहबा जदी टाइम अनुसार चेंज हला dp बाय dt a small change in momentum हला dp कहंती टाइम अनुसार हले बाय dt तो सारा खाली मन रखतो चेंज इन मोमेंटम कहले प्रश्न आसले चेंज इन मोमेंटम कहले भाबी नबो दुईटी स्थान रे एठी मोमेंटम आ एठी मोमेंटम दीटा का मोमेंटम रो डिफरेंस को डिफरेंस फाइनल स्टार्टिंग पोजीशन और इनिशियल जो दीटा स्थान रे हम देखुचे तो फाइनल पोजीशन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम तो ये चेंज इन मोमेंटम विषय कहले हम न्यूटन सेकंड ला से कोन कहले जे वस्तु ऊपर फास्ट देखो बुझ फास्ट अब नियम लेखा एटा हला गोटे बॉडी से कहले बॉडी ऊपर जेतला हमें फोर्स टा अप्लाई कले किंतु फोर्स टा देले फोर्स अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जहा भी को फोर्स ओटा अप्लाई कले कहले फोर्स अप्लाई कले एक फोर्स टा सपोज मूविंग कला फोर्स टा मूविंग करूची तो फोर्स अप्लाई करछे वस्तु बॉडी टा हमर मूविंग करूची से समय कोन होची कहले वस्तु मूविंग कला एमति बाटा गला एठी गला मूविंग करके ए जगह पहुंचला ओके ये भी सेम चली छी तो एतर मूविंग करके चली छी वस्तु टा तो हमें कोन कले दीटा पॉइंट हमें कोन कले फिक्स्ड कले ए दीटा पॉइंट रे देखिले दीटा पॉइंट कोन से तो मूविंग करके चली छी बहुत गुटे पॉइंट आसे हमें दीटा पॉइंट रे फिक्स कले आ दीटा पॉइंट रे मोमेंटम से मानकर बाहर कले आ obviously you know momentum change हो कारण velocity जदी चेंज velocity चेंज रहबनी कांस्टेंट velocity रहले तो momentum 0 हो जिवो केबे आसीबो नै से कहला त momentum होउची त हम चेंज इन velocity भी होउची काहे कि बोली तो दीटा कतले velocity चेंज होउची तो momentum भी चेंज होउची सपोज एठी गोटे momentum हला एठी गोटे momentum हला एटा सपोज 5 एटा सपोज 7 हे गला से कहले मानकर चेंज इन momentum केते 2 प्रति स्थान रे चलिबो आ स्थान रे अछि चेंज इन मोमेंटम प्रति पॉइंट रे मोमेंटम चेंज हे चलछि ए जो चेंज इन मोमेंटम टा डिपेंड करछि का ऊपर ना एफ ऊपर केमति ना डायरेक्टली एफ टा चेंज इन मोमेंटम सहित डिपेंड करछि डायरेक्टली एफ टा मोमेंटम पे डिपेंड करछि अर्थात जे मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम तो कम बेसी होबो कोडी बढ़िबो कोडी कमिबो कोडी बढ़िबो कोडी कमिबो कहा पे डिपेंड करे वेलोसिटी जदी बढ़िला मोमेंटम बढ़िला कारण मास कांस्टेंट रहला when mass constant when two bodies mass constant velocity differ then momentum direct proportional to velocity जदी वस्तु कंटीन्यू चलला तो मास सब जगह कांस्टेंट रहला तो वेलोसिटी जदी बढ़ी बढ़ी चलला की कमिला भी जा हो तो मोमेंटम से अनुसार बढ़िबो कमिबो तेनकरी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पर डिपेंड करछि तो वेलोसिटी से मोमेंटम कम बेसी हला तो से कहले जो कम बेसी होची तो प्रति जगह मोमेंटम चेंज हे चालुची से चेंज इन मोमेंटम ता फोर्स सहित डायरेक्टली वैरीज करिस सड़क चलन सृष्टि करे तामे जदी मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम जदी बढ़िला फोर्स ता बढ़िबो अप्लाई फोर्स ता अधिक थिबो जदी चेंज इन मोमेंटम ता कम होचे अप्लाई फोर्स ता कमी जाउची बा जदी एक्सटर्नल फोर्स ता हम अधिक दउचे ताले से वस्तुर से बॉडीर मोमेंटम ता अधिक होउची यदि अप्लाई फोर्स ता कमी जाउची त चेंज इन मोमेंटम ता भी कमी जाउची जानि परलो तो एई कथा से न्यूटन कहले
କହିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ବା ସେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଯେହେତୁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ତାର ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି ତାର ଡିରେକ୍ସନ ଟା କହୁଛ ନା ଆପ୍ଲାଏଡ ଫୋର୍ସ ଟା ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ହବ ତ ମୋମେଣ୍ଟମ ର ଡିରେକ୍ସନ ଟା ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହବ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହବ ସେଇଟା ସେ କହିଲେ ନ୍यूटन କଣ କହିଲେ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समय अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कौन कहले dp बाय dt काहे कि से कहले तो जेतले चेंज हो जे हमें एते जगह ना माने बहुत स्मॉल जगह ना बा जोठे कि वेलोसिटी बहुत कम चेंज हबो तापर मोमेंटम भी बहुत स्मॉल चेंज हबो तो जे स्मॉल चेंज इन मोमेंटम कोन लिखे हमें dp बहुत स्मॉल वेरी स्मॉल मोमेंटम चेंज हबो dp अच्छा वेरी स्मॉल मोमेंटम चेंज हो ताको सेति में टाइम टा केते लागिथिबो बहुत स्मॉल टाइम लागिथिबो तो बहुत स्मॉल हेले dt समय अनुसार मोमेंटम चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम संवेग परिवर्तन र हार ओडिया रे पढितलो 9th क्लास पढितलो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोन संवेग परिवर्तन र हार वस्तु उपरे प्रयोग होइतिबा प्रयुक्त बल सहित समानुपाती बल देखिदो हला तो एटा कि समय संवेग परिवर्तन हार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force and direction towards the force momentum direction कौन हो force direction रे हो तो से लिखिए write down law this law states that the Newton's second law of motion states that rate of change of momentum is directly proportional to applied force and direction towards the force applied force तो लॉ टा बुझी पल्ला the rate of change of momentum is directly proportional to applied force आकु हम कोन करिया डेरिवेशन करिया analytically derived अच्छा देखो let a body having mass m moving with velocity v okay then according to Newton's second law of motion कौन पढ़ले rate of change of momentum कौन कहली rate of change of momentum हला dp by dt rate of change of momentum is directly proportional to मैं लिख दो आप f direct proportional to p लिख दे first post applied force f direct proportional to p ऊपर डिपेंड करूछ हम लिखि परिबा काम करो आग मोमेंटम टा बाहर करते तापर डायरेक्शन करिया ओके मूविंग विथ वेलोसिटी एटा पछ लिया हला आग मोमेंटम बाहर करिया
momentum p is equal to कौन है हमारा mv momentum p is equal to कौन है हमारा mv let a body having mass m moving with velocity v then momentum हमारा कौन है mv तो वर्तमान कौन कर दी पटे पार्श्व को हमें डिफरेंशिएट कर दवा बाय differentiating both the sides we get both the sides कते कना जोनो dp by with कहा द्वारा with respect to समय t द्वारा हमें डिफरेंशिएट कर दिया टाइम dp by dt is equal to d by dt कौन mv ओके डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ो डेरिवेटिव का फार्मूला अपन देखिए एट लेखा dp by dt डेरिवेटिव ऑफ मास तो जे कांस्टेंट जेतला गोटे वस्तु जाउची तो कांस्टेंट रो डेरिवेटिव एपटू आनी बारी तो m dv by dt अच्छा this implies that dp by dt is equal to dv by dt small change in velocity by respect to time acceleration जले गोटे वस्तु रे कंटिन्यू जाउची एटी वेलोसिटी चेंज होची धर v1 एटी v2 तो एटी एक्सेलरेशन केते होतला v2 v1 by t बायटा u थिला प्रारंभिक परिवेग एटा v थिला फाइनल वेलोसिटी एटा हला इनिशियल वेलोसिटी ए कोते थिला v u by t न्यूटन्स रो काइनेमेटिक्स चैप्टर द न्यूटन रो समीकरण लीनियर इक्वेशन जोटा m d by dt होची ए एटी बाहरी पहला तापर लेखिया एटी बोलिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एटी कोन करिया सेकंड लॉ मोशन होजी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स the rate of change of momentum f direct proportional to rate of change of momentum that dp by dt and a small change in momentum applied to the so this implies that f dp by dt ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା କେତେ ଆମର ma अच्छा प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट को सदाले प्रोपोर्शनालिटी को उठा गले हम गोटे कांस्टेंट टर्म यूज करिया पड़िबो तो कोन करिया f is equal to k m a એટલે કે k is equal to where k is equal to proportionality constant if k is equal to 1 then f is equal to ma तो न्यूटन सेकंड लॉ रे भाला f is equal to ma mass into acceleration एतला न्यूटन सेकंड लॉ तो वर्तमान तो भाला न्यूटन सेकंड लॉ रू फ्रॉम न्यूटन्स second law of motion we get f is equal to ma एडाला न्यूटन ना सेकंड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन दा सबुठू वेरी इंपोर्टेंट लॉ आउ रियल लॉ तो f रो मूल्य बाहरला ताले एटा हम कहि परिया फोर्स डेफिनेशन hence force is also defined as the product of
mass and acceleration। तो बाहर करिया यूनिटी ऑफ फोर्स लेगा मास होची केजी ए होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन करिया केजी मीटर सेकंड टू द -2 एंड अब कौन ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 in SI and CGS system respectively। Dimension, it has dimension m rala m rala l t minus 2 mlt minus 2। तो एटा हला इट इज यूनिट टा कोन करिया एटा हला न्यूटन आउ डाइन फोर्स एज यूनिट लाइक न्यूटन जोटा हमर करले हां केजी मीटर सेकंड -2 डाइन होची ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। ओके तापरे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square is equal to 1 kg लिख परिया में 1000 ग्राम into 100 centimeter per second square is equal to परिया 10 to the power 3 gram into 10 to the 2 centimeter per second square is equal to 10 to the power 5 gram centimeter per second square is equal to 10 to the 5 gram centimeter per second square है लगना डाइन। देखो 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन। गोटे एक केजी वस्तु ऊपर द मास फोर्स अप्लाइड न्यूटन डेफिनेशन कौन करियो when mass force are applied to a 1 kg mass of body if 1 meter per second square accelerates if it accelerates 1 meter per second square by the when if 1 meter per second square acceleration creates on that body then the which force applied the body is called Newton। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ କେଜି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଟା 1 ମିଟର पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन सृष्टि हुए ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଫୋର୍ସ ପରିମାଣ ଅଛି 1 ନ୍यूटन। ସେଇ भଳି when mass force applied on 1 gram masses body by body of 1 gram mass if it possesses 1 centimeter per second square acceleration then the force is called the quantity of force is called 1 dyne। तो एतिक लिखि देलो तो हम तापरे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपोर्टेंट लॉ प्लस हो जाईची। तो नेक्स्ट वीडियो रे हम जिबा इंफोर्स और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट टॉपिक। तो आज मैं एतिक गुड डे।